A car has a siren surrounding a 2 kilohertz tone. What frequency will be detected as a stationary observer as the car approaches him at 80 kilometers per hour? एक कार है जो कि एक फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है, उसका सायरन, वो फ्रीक्वेंसी कितने की है? 2 किलोहर्ट्ज की है. सो द फ्रीक्वेंसी दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द कार इज 2 kilohertz, or you can write it as 2000 hertz. Now let's say this is my car, alright, and let's say I have a listener who is at rest. ये उसके दो बड़े बड़े कान हैं जिससे वो ये सुन रहा है, ठीक है. Now the frequency that is produced here, वो जो यहाँ पर जा रही है, ये कार मूव कर रहा है towards the listener and the source is moving towards the listener. तो जो velocity of source है that is given to me as 80 kilometers per hour. This is the velocity with which, ये वो velocity है जिससे मेरा source, यानी let's say ये कोई siren लगा हुआ है, ये इस frequency को produce करता हुआ पहुंच रहा है इस listener तक, and this is the listener which is at rest. So our case is actually the case in which source is moving towards the listener at rest. So my listener is at rest. Here in this case the frequency observed by the listener, वो जो listener को frequency मिलेगी, अगर मैं उसे f bar से represent करूँ तो that will be given by v over v minus vs times the frequency that was generated. So the frequency generated was 2000 hertz. V represents the velocity of sound, और velocity of sound को मैं अगर मैं किलोमीटर्स पर आवर में लेना चाहूँ तो that will be approximately 1200 किलोमीटर्स पर आवर. ये वैल्यूज आपको याद होने चाहिए, जरूरी नहीं कि एग्जाम में आपको गिवन हो. ये बहुत जनरल फैक्ट्स हैं. तकरीबन 1200 किलोमीटर्स फी घंटा की रफ्तार से साउंड वेव ट्रेवल करती है नॉर्मली, ठीक है जी. Now all I have to do is just put the values in this equation. So velocity की जगह I will be putting 1200. Again यहाँ velocity of sound की जगह I will be putting 1200 minus velocity of source की जगह I will be putting this 80. And इस पूरे को then मैं multiply करूँगा the frequency of the sound that was actually produced, and I was 2000 hertz. So my frequency received will be approximately equal to 2143 hertz, or you can call it as 2.143 kilohertz, and this is my answer.